Chapter number 10 OR LPP Question number 2 Practical from Practice Manual. Theory question. What are the practical application of linear programming? तो पहले हम इसका एक चार्ट के थ्रू पढ़ लेते हैं. तो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग का. तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन क्या है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. सबसे पहले ये इंडस्ट्री पे लगता है. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, प्रोडक्शन प्लानिंग के ऊपर, ब्लेंडिंग मिक्सिंग प्रोडक्शन के ऊपर, डाइट प्रॉब्लम, ट्रिमिंग प्रॉब्लम, एडवर्टाइजिंग मिक्स, फाइनेंशियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, फ्लाइट शेड्यूलिंग एंड एप्लीकेशन. अब ये सबको हम एक कनेक्ट करते हैं एक स्टोरी के द्वारा. तो सबसे पहला मुझे पता चला कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट जो है सीधा इंडस्ट्री को लगता है. तो मैं इंडस्ट्री एप्लीकेशन में गया. जैसे इंडस्ट्री एप्लीकेशन में गया मुझे पता चला कि वहाँ प्रोडक्शन की प्लानिंग चल रही है. और जो प्रोडक्शन की प्लानिंग चल रही है उसमें ब्लेंडिंग का प्रॉब्लम है, मतलब मिक्सिंग का प्रॉब्लम है. और जब वो मिक्सिंग की प्रॉब्लम को रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि उधर दो और तरह के प्रॉब्लम इंक्लूड है, जैसे डाइट प्रॉब्लम्स और दूसरा है ट्रिम प्रॉब्लम्स. फिर डाइट और ट्रिम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने बोला कि हम एडवर्टाइजिंग मिक्स का यूज़ करेंगे. जैसे ही उन्होंने एडवर्टाइजिंग मिक्स का यूज़ किया उन्हें पता चला कि पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. तो उन्हें क्या चाहिए, फाइनेंशियल एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. नीड है फाइनेंशियल एप्लीकेशन की. फिर फाइनेंशियल एप्लीकेशन को लाने के लिए उनके पास एक एग्रीकल्चर एप्लीकेशन था. उसे सोल्ड कर दिया और जो पैसे मिले उससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्लाइट को शेड्यूलिंग एप्लीकेशन लेके घूमने के लिए चले गए. फ्लाइट शेड्यूलिंग एप्लीकेशन को लेके घूमने के लिए चले गए. तो इन शॉर्ट हम पढ़ लेते हैं थोड़ा ऊपर से. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि कॉस्ट का हमारे एक स्टोरी रेडी हो गया तो इस वजह से हम वापस पॉइंट को रिवाइज कर सकते हैं. तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में होता है कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करना, प्रोडक्शन मिक्स को इम्प्रूव करना. प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब प्रोडक्ट मिक्स होता है और प्रोडक्शन मिक्स होता है. सेविंग दैट इज प्रॉफिट सेविंग हो गया, प्राइजेज हो गए, सेलिंग प्राइजेज हो गए. प्रोडक्ट मैक्सिमाइजेशन ब्लेंडिंग में अपना होता है, जैसे कि वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स है उसके अंदर. मेका यूनिट्स हो जाते हैं अपना. डाइट प्रॉब्लम मतलब इट्स नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम ब्लेंडिंग प्रॉब्लम. ये ज़्यादा ब्लेंडिंग प्रॉब्लम अलग नहीं है. ट्रिम प्रॉब्लम क्या है, ट्रिम मतलब काटना. तो एप्लीकेबल होता है टू पेपर इंडस्ट्री के ऊपर. कट पेपर को कट करने के लिए कस्टमर नीड्स के तो और मिनिमाइजेशन वेस्ट हो. एडवर्टाइजिंग एनालॉजियस का मतलब अनुरूप टू द प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम. मतलब जो एडवर्टाइजिंग मिक्स है वो अनुरूप है प्रोडक्ट मिक्स की ही तरह हम इसको ट्रीट करते हैं. दैट इज अनुरूप मतलब एनालॉजस. तो एनालॉजस बोलते हैं. एनालॉजस मतलब अनुरूप, उसी अनुरूप में है ये भी. फाइनेंशियल एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सिलेक्शन के लिए काम आता है. एग्रीकल्चर एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन रिटर्न और मिनिमाइजेशन कॉस्ट के लिए. फ्लाइट शेड्यूलिंग एप्लीकेशन वैरायटी ऑफ ऑपरेशनल शेड्यूल्स के लिए. ठीक है. अब पूरा हम थियोरी को रीड करके समझते हैं.
क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग? आंसर, in addition to its wide use in industrial and administrative applications, linear programming has extensive application to agriculture, aircraft, several military problems. These are briefly discussed below. Industrial application. These are basically product mix problem in which the general objective is to derive the optimal production and procurement plan for the time period under consideration. The measure of effectiveness is either a defined return that is short to be maximized or a defined cost that is to be minimized. Production planning, product mix. An industrial concern has available a certain production capacity on a various manufacturing processes and has the opportunity to utilize this capacity to manufacture various products. Typically, different product will have different selling price, will require different amount of production capacity at a several processes, and therefore will have different unit profit. There may also be stipulations on maximum and or minimization production levels. The problem is to determine the optimal mix so that the total profit is maximized. Third, blending problems. These problems are likely to arise when product can be made from a variety of available resources, variety of available raw materials of various composition and prices. The manufacturing process involves blending, mixing some of these material in varying quantities to make a product conforming to give specifications. The supply of raw materials and specifications serve as constraints in obtaining the minimum cost material blend. The solution would state the number of units of each raw material which are to be blended to make one unit of product. Diet problem are not much differ from the blending problem. Trim problems. Trim problems are applicable to paper industry where paper of standard width has to be cut into smaller width as per customer requirements with the objective of minimizing the waste produced. Advertising mix. Advertising mix problem is analogous to the product mix problem. Analogous मतलब उसी के अनुरूप होना. Financial application. The investment portfolio selection problem can be satisfactorily handled by the linear programming. Agriculture application. This deals with somewhat different resources but objectives are not nevertheless same, to maximize the return from the allocation activity or to minimize some defined cost. Flight scheduling applications. Linear programming has effectively applied to variety of operational scheduling problems. Other applications of linear programming include structural design, scheduling military tankers fleet, minimizing the number of carriers to meet a fixed schedule, the least ballast shipping required to meet a specific shipping program, cost cutting in business, fabrication scheduling, computations of maximum flows in network, steel production scheduling, stocks, flaws, the balancing of assembly line, etc. Thank you. Complete.